Good morning students. How are you all doing? All are doing well? Well done. Students, in the previous video, you all have learned about the structure of flower and pollination. So, can you tell me what are the main parts of a flower? Yes, these are petal, sepal, anther or stamen and carpel or pistil. Now, can you tell me what is pollination? Yes, pollination is the transfer of pollen grains from male part of a flower to a female part of the same flower or the another flower of same species. Is it clear? Now in this video we will learn about fruits. How do the fruits produce? आज हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. फ्रूट्स आते कहाँ से हैं या फ्रूट्स बनते कैसे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लावर के स्ट्रक्चर में आप बताओ फीमेल पार्ट कौन सा होता है. यस, दिस इज कार्पेल और पिस्टिल. तो कार्पेल के कितने पार्ट्स मैंने बताए थे, कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है वो 3 पार्ट्स में. कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. इज इट क्लियर? और मेल पार्ट कौन सा होता है? एंथर या स्टेमेन. तो इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है? एंथर. और उसकी जो डंडी होती है, स्टॉक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट. तो मेल पार्ट का काम क्या होता है? मेल पार्ट जो एंथर होता है उसी में पोलन ग्रेन्स होते हैं. ठीक है, पोलन ग्रेन्स या डस्ट बोल सकते हैं. अब ये डस्ट का काम क्या होता है? ये डस्ट उड़ते हुए कहाँ पर पहुँच जाते हैं? स्टिग्मा में पहुँच जाते हैं. स्टिग्मा क्या है? फीमेल पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा स्टिकी पार्ट होता है. पॉलन ग्रेन इस पर आकर चिपक जाते हैं और फिर स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए ओवरी में पहुंच जाते हैं. और ओवरी में ही क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, जिससे पॉलन ग्रेन्स जाकर मिल जाते हैं और फिर सीड बन जाता है. ओवरी के अंदर ही सीड का फॉर्मेशन होता है और ये ओवरी धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और बड़ी होकर फ्रूट बन जाती है. और जितने भी पेटल्स मीन्स फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो सूखकर नीचे झड़ जाती हैं और सिर्फ ओवरी बड़ी होकर फ्रूट बन जाती है. और आपको पता है फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? यस, सीड्स होते हैं. और सीड के अंदर एक न्यू बेबी प्लांट छुपा होता है. लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम फ्लावर. What happened, Spiky? You look surprised. Mrs. Coco, I visited this orchard a few weeks ago and I remember that there were flowers growing here. Now there are fruits. What happened here? Nothing's happened. It's just a natural process through which flowers turn into fruits. That sounds amazing. Do flowers lay fruits like hens lay eggs? No, Spiky. After fertilization, the ovary of a flower develops into a fruit. What's fertilization? Fertilization is the fusion of male and female gametes that occurs in the ovule of a flower. Fertilization takes place in 3 steps: the germination of pollen grains, zygote formation, and finally, embryo formation. Let's take a look at each step. The first step is the germination of pollen grains. After pollination, the pollen grains that are trapped by the stigma germinate. The pollen grows into a long pollen tube that extends down the style to enter the flower's ovary. Next, the nucleus of the pollen grain divides into 2 male gametes. Then, the pollen tube bursts and releases the male gametes inside the ovule. One of the male gamete fuses with a female gamete and forms a zygote. A zygote is a combination of a male and female gamete. The zygote divides many times before forming an embryo. An embryo is a baby plant that grows inside a seed. Finally, during the end of fertilization, the embryo is covered
by a tough outer covering called a seed coat. But it does not look like a fruit at all. You're right, Spiky. After fertilization, several changes take place in a flower. For instance, the flower's sepals, petals, and stamens dry up and fall off. Then, the ovules, which contain the embryo, develop into a seed. The ovary grows bigger and ripens into a fruit. The skin of the fruit, or the pericarp, develops from the walls of the ovary. At this point, the flower completely becomes a fruit. Did you know many people think that tomatoes, brinjal, and cucumbers are vegetables, but they're actually fruits? Can you guess why? Because they develop from the ovary of a flower and contain seeds. Did you know that almonds, walnuts, and pistachios are seeds? This is why they have a thick, dry, and tough seed coat. Likewise, peanuts, peas, and beans are edible seeds enclosed in pods. Almost all flowering plants produce fruits, but not all their fruits are edible, such as the fruit of a sunflower. Let's summarize. Fertilization is the fusion of male and female gametes. After fertilization, a zygote is formed, which grows bigger to form an embryo. Then, the flower undergoes several changes and the ovary develops into a fruit. As the ovary grows bigger, the ovules develop into seeds. Did you understand now? We can say the pistil of a flower turns into fruit. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब सूखकर अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन जो फीमेल पार्ट होता है जिसे हम पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं उससे ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है. द कार्पेल्स फाउंड इनसाइड फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स एंड fruits come in many shapes, sizes and colors. Now can you tell me the function of fruit? Fruits have two main functions. First is fruits protect the seeds that are found inside them. And we know fruits can have one seed or many seeds. Some fruits such as mangoes have one seed only, but apples and oranges have many seeds. Now tell me, why do we eat fruits? Can you tell me? हम फ्रूट्स क्यों खाते हैं? क्योंकि फ्रूट्स में एक्स्ट्रा फूड स्टोर रहता है. बिकॉज फ्रूट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड. अंडरस्टूड? एंड एज यू हैव सीन इन द वीडियो दैट टमाटो, लेडी फिंगर, बिटर गॉड, बॉटल गॉड एंड चिली, they all are fruits that we use as vegetables. Is it clear now? Now here are home learns for you. Firstly, you have to draw a beautiful picture of a fruit along with its seed. फ्रूट की पिक्चर आपको ऐसे ड्रॉ करनी है जिससे उसके सीड भी दिखाई दे. अंडरस्टूड? एंड सेकेंड थिंग इज you have to write the definition of pollination and fertilization. Is it clear? In the next video, we will learn about seeds. How does a seed grow into a new baby plant? That's all in this video. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.